Let us see the solution of question number 9. When two taps fill the tank together, let I have taken a smaller tap, that is larger tap. When these two taps fill the tank, it takes 9 whole 3 upon 8 hours, means that is 75 upon 8 hours, means whole tank, means that is one part. But the smaller tap fill the tank separately, let we assume as x आवर. अगर ये स्मॉलर टैप इस टैंक को x आवर में सब फिल करता है, देन द लार्जर टैप will fill the same tank in x minus 10 hours according to the question. Okay, so see the steps. Let the smaller tap fill the tank in x hour, the larger tap fill the same tank in x minus 10 hour. Okay, now tank filled by smaller tap in 1 hour. अगर ये x आवर में पूरा टैंक ये फिल करता है तो 1 आवर में 1 अपॉन x पार्ट ही तो फिल करेगा. सो टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर टैप इन 1 आवर इज इक्वल टू 1 अपॉन x पार्ट. ओके, सिमिलरली टैंक फिल्ड बाय द लार्जर टैप इन 1 आवर इज इक्वल टू 1 अपॉन x minus 10 parts. You can see in the diagram, if the larger tap fill the same tank in x minus 10 hour, so in 1 hour it will be 1 upon x minus 10 part. Now according to the question, when this tank filled by both the tap, means smaller tap and the larger tap in 1 hour, अगर 1 hour में दोनों टैप मिल करके इसको कितना फिल करते हैं, so for that we have to add this part and this part. See next steps. Since tank filled by the two taps together in 1 hour is equal to 1 upon x plus 1 upon x minus 10. By taking LCM, x and x minus 10 is the LCM. In next line, 2x minus 10 upon x square minus 10x. When you take x minus 10 as LCM, it will be x minus 10 1 ja x minus 10 and x 1 ja x, so x and x 2x minus 10 upon x square minus 10x. Okay, so this was the time taken by the tank filled by the tap together in 1 hour. But in the question it's given that tank filled by the two taps together in 9 whole 3 upon 8 hours, that is 75 upon 8 hours. अब ये दोनों टैप मिल करके इस टैंक को जो फिल किया हुआ है वो मैंने 1 आवर का निकाला था, अब हमको निकालना है 9 होल 3 अपॉन 8 आवर्स, क्योंकि 9 होल 3 अपॉन 8 आवर्स में ये दोनों टैप इस टैंक को फिल करते हैं. सो इन 9 होल 3 अपॉन 8 आवर्स जब इसका निकालेंगे, जब दोनों टैप साथ में जब इसको फिल करते हैं, जस्ट वी मल्टीप्लाई बाय 75 अपॉन 8 इंटू दिस मच. ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मतलब दोनों टैप जब इस टैंक को फिल करते हैं कितने आवर्स में, 75 अपॉन 8 आवर्स में. तो 75 अपॉन 8 आवर्स में ये होल पार्ट, मतलब 1 पार्ट को ये फिल करते हैं दोनों टैप. तो यहाँ पर वही है 75 अपॉन 8 इंटू द पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय द वाटर टैप, that is 2x minus 10 upon x square minus 10x is equal to 1, that is whole tank, whole part. Now I have taken 2 as common, 2 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा x minus 5, 2 को हम रिड्यूस कर देंगे 8 से, सो 2 4 जा, और ये डिनोमिनेटर में है x स्क्वायर माइनस 10x. इन नेक्स्ट लाइन में इसको हम इधर ट्रांसपोज कर देंगे, तो 75 इन ब्रैकेट x minus 5 और 4 और x स्क्वायर माइनस 10x को हम ट्रांसपोज कर देंगे, इधर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 10x. ओके, नाउ इन नेक्स्ट लाइन हम ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, 75 इंटू एक्स, 75x माइनस 75 5 जा 375. हियर ऑल्सो 4 इज मल्टीप्लाई विद द एक्स स्क्वायर, 4x स्क्वायर माइनस 40x. नाउ just we transpose all together in left side, it will be 4x square minus 40x minus 75x plus
375 is equal to 0. That is 4 is x square, 40x minus 75x, minus 40x minus 75x will be added. It become minus 115x plus 375 is equal to 0. Now it is an standard quadratic equation. By any convenient method you can find the value of x. x की वैल्यू निकालने के बाद इसको इसमें पुट कर देंगे x hours and x minus 10 hours. Then we will get the time taken by the smaller tap as well as the larger tap. That's all.